So if you're watching this video, it means that you have a pet and you're planning to travel with your pet anytime soon. So in this video, I'm going to talk to you about the whole process of taking a pet in Air India Airlines in anywhere in India. And I have broken down this whole video into 12 different steps. And if you follow the steps, you will have no problem traveling with your pet in a flight in India. So hello my friends, my name is Alamgir and this is my girl. Her name is Oreo, she is a Shih Tzu, and welcome to our channel. I have flown with her on Air India flights almost like 4 or 5 round trips, जो almost 10 बार फ्लाइट में मैंने ट्रैवल किया इसके साथ. So मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ और जो भी मैंने सीखा इसके साथ ट्रैवल करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. So if you haven't watched the vlog of me and Oreo flying from Bangalore to Guwahati, then do check out this video which I will be putting up in the link somewhere here. और उस वीडियो में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा. वो एक व्लॉग है, मैंने फुल डॉक्यूमेंटेशन किया है फ्रॉम एयरपोर्ट चेक इन करने के टाइम से लेके द होल प्रोसेस एंड टिल द फ्लाइट. पूरा फ्लाइट का जो ड्यूरेशन है मैंने फुल एक वीडियो बनाया, एक व्लॉग बनाया है. सो डू चेक दैट आउट. सो मेरे इस वीडियो को देख के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आते रहे. I have been contacted in Instagram, Facebook, on my WhatsApp, and I have even got so many phone calls. Every time I get lot of similar questions and बहुत सारे similar questions ही रहते हैं लोगों के पास. That is why I decided to make this video to clear up all the queries and all the doubts for all the future travelers. So this video is going to be a little longer video, but this is going to be very informative if you want to fly with your pet anytime soon. It will help you a lot. So do watch this video till the end, and I will also make a Q&A video very soon with all the questions and all the queries that I receive. If you have a similar query, आपके पास अगर similar questions या फिर similar doubts है तो वो video भी देख के आपका doubts clear हो सकता है. So I will link up the video somewhere here. So first let's talk about which airlines allow pets to be carried in the flight. So currently there is only Air India and SpiceJet, only 2 airlines in India which allows pets to be carried in their flights. And I have been traveling from the last 3 years, and I have always traveled in Air India because Air India is a very pet friendly airline and it does not have so much of rules and regulations, and the rules are pretty simple. SpiceJet on the other hand has tons of rules and regulations. इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप सोचोगे कि मैं एयर इंडिया में ही ट्रैवल कर लेता हूँ यार. एक तो वाइल बुकिंग द फ्लाइट स्पाइस जेट में ओनली 800 एंड 900 सीरीज के फ्लाइट्स में ही आप पेट लेके जा सकते हो. ओनली 800 एंड 900 सीरीज अलाउ पेट्स टू बी कैरिड ऑन बोर्ड. ऑल्सो दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रीड रेस्ट्रिक्शंस. बहुत सारे ब्रीड्स को नहीं लेके जाने देते हैं. सो ब्रीड्स लाइक फ्लैट फेस, जो भी फ्लैट फेस है, लाइक शिजू, लासा अपसो एंड सो मेनी डिफरेंट ब्रीड्स आर नॉट अलाउड इन स्पाइस जेट. ऑल्सो बहुत सारे बिगर डॉग्स है उसको भी अलाउ नहीं करते. सो उसका फुल लिस्ट है वेबसाइट में, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. बहुत सारे कैट्स भी अलाउ नहीं करते एंड बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी अलाउ नहीं करते. सो इट्स बेटर दैट यू स्टिक टू एयर इंडिया. इज द सेफेस्ट फ्लाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ पेट्स in India. So now let's talk about what kind of animals are allowed in Air India. So in Air India Airlines, you can actually carry any kind of a household pet. मतलब कि dogs, cats, rabbits, hamsters, birds, all these animals which are not in the endangered species list and which are not exotic items, like exotic कोई भी animals ना हो, तो then you can carry them in the Air India Airlines. Good girl. Okay, so step one is to go to the Air India website and check out the latest pet policy. Because कई बार ऐसे होते हैं कि उन लोग पेट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करते हैं. फ्लाइट बुक्स करने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आप जाके वेबसाइट में देख लो सारे डिटेल्स, ऑल द पॉलिसी, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बार पढ़ लो. इट इज़ वेरी वेग, आई नो, आई हैव गॉन थ्रू द सेम वेबसाइट. मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आया था और मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, बोलते हैं कि एयर इंडिया वेबसाइट में ज़्यादा डिटेल्स में सब कुछ नहीं लिखा है. बट डोंट वरी, जस्ट टू मेक श्योर दैट नथिंग एल्स चेंजेस. मैं सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा हूँ. आई विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस. बट एक बार आप जाके वेबसाइट में देख लो.
अगर उसमें कोई भी मेजर चेंजेस है तो वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ रहेगा. सो ऑलवेज वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, just go back to the website and check it out. Even I do that every time I travel. Just before traveling and booking that flight tickets, I go to the website और सारा डिटेल्स में एक बार चेक कर लेता हूँ. Then step 2, booking the flight tickets. So if you're booking the ticket, I would say please book a direct flight to your hometown. And if you don't have a direct flight to your hometown, and if you have a one-stop flight, then please book a one-stop flight where जिसमें आपको फ्लाइट चेंज करने का ज़रूरत नहीं है. ओके, सो एनी फ्लाइट विच हैज़ अ वन स्टॉप और मे बी इट्स अ वाया फ्लाइट वेयर यू डोंट हैव टू चेंज द फ्लाइट, यू कैन बुक दैट फ्लाइट. लेकिन अगर ऐसा फ्लाइट है कि बीच में 2-3 घंटे का ले ओवर है एंड देन यू हैव टू चेंज द फ्लाइट, एक फ्लाइट से उतर के दूसरा फ्लाइट में जाना है, देन प्लीज़ डू नॉट बुक दोज फ्लाइट्स. बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपका कार्गो एक फ़्लाइट के लिए परमिशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप सबमिट करोगे तो दूसरे फ्लाइट के लिए भी फिर से करना पड़ेगा. तो उसमें बहुत सारा हैसल होता है. यू हैव टू गो आउट टू द बुकिंग काउंटर, सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन टेक द कार्गो फ्रॉम वन फ्लाइट टू द अदर, अगेन वेट फॉर द परमिशन फॉर द कैप्टन एंड ऑल. बहुत सारा मुसीबत, बहुत सारा झंझट है. सो इसीलिए बेस्ट वे टू ट्रैवल डायरेक्ट फ्लाइट्स, और इफ यू डोंट हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट, अ वाया फ्लाइट वेयर यू हैव अ 15 minutes लेओवर और स्टॉप जिसमें आपको फ्लाइट चेंज करने का ज़रूरत ना हो. ओके, सो अभी आपका टिकट बुक्स हो गए. सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3, विच इज़ फाइंडिंग द राइट क्रेट और द बैग फॉर योर पेट. इफ यू डोंट नो, देर आर 2 ways ऑफ टेकिंग अ, looks like Oreo is done with this show. Okay, so if you don't know, there are 2 ways of taking a pet in the flight. One is you can carry them in the cabin. Yes, you can, आप कैबिन में उसको लेके जा सकते हो अगर ब्रीड छोटा है, अगर इफ़ यू हैव अ स्मॉलर पेट. और दूसरा is carrying it in the cargo. If you have a very big dog, then you have to carry her or him inside the cargo hold. But if you're planning to take your pet inside the cabin, then there are a couple of rules that you need to follow. One is to get a very lightweight bag, because the combined weight of your dog or your pet and the crate, both the combined weight, दोनों का weight को मिला के it should be less than 5 kilograms. 5 किलोग्राम से नीचे होना चाहिए. If it is more than 5 kilograms, then they will not allow to carry her or him inside the cargo. So maybe अगर 100 ग्राम का difference है, अगर 100 grams, if it is more than 5.1 kilogram or something, maybe they will allow you if you request them, but I'm not sure. So you can't take the risk. So always carry a very lightweight bag or a crate like this. I have this. This is a mesh bag. This is made out of very hard fabric. It's reinforced fabric. इसमें mesh भी लगा हुआ है. So there is a net. You can see the pet. It is well ventilated and it is very safe for your pet. It is very rigid. It has a very hard bottom. So इसमें आप छोटे breeds and छोटे animals को लेके जा सकते हो. Rabbits and cats and all these small breeds. And I have traveled with Oreo for the first couple of flights in this bag, because तब उसकी weight 4 किलोग्राम के आसपास था and this weighs only 800 grams. So दोनों को मिला के 5 किलो के अंदर होता है. Then you can easily carry inside the cabin when you have a bag like this. और हाँ, और एक चीज़, the dimension of this bag should not be more than 18 inches. This should be 18 inches, 1.5 feet, and the height can be 1.5 feet, and the depth can be 12 inches. So anything which is 18 inches by 12 inches. So make sure whenever you are buying a bag or a crate for the pet inside the cabin, make sure it is not more than 18 inches long and it is not very heavy. Okay, so second type is the crate, which will allow your pet to be carried inside the cargo, because cargo में crate चाहिए, वो solid होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, and it should be rigid like this. I have it here. This is a plastic crate which can be dismantled. इसको पूरा खोल सकते हो आप, पूरा खोल के folding करके छोटा बन जाता है. Because it should be solid and rigid at the same time. बहुत lightweight होना भी चाहिए. अगर इसका weight ज़्यादा हो गया then you have to pay more
money in the cargo. So it's better that you have a very lightweight. I would suggest this plastic ones. Plastic one काफ़ी मजबूत भी होते हैं and काफ़ी lightweight भी होते हैं. I got this from Amazon. I got this bag also from Amazon. I can share the links in the description. आप जाके एक बार चेक कर सकते हो. And this is around 2.5 kilograms. 2.5 किलो का ये. And with my pet, my Oreo is around 5.6 kilograms. So उसको कुल मिला के 7 किलो के आसपास होता है. So you can buy some crate like this from your local pet shop or from Amazon. Just make sure it is not very big and it is not open. जो नेट का होता है, it's metal का जो होता है, it's like a whole metal box. I would suggest not to take those because वो पूरा खुला रहता है. So the dog or the animal can see whatever is going outside. If you have a box like this, a crate like this, the pet will feel more secured. Or because ये crate बहुत सारे machines and गाड़ी and then flight में जाने वाला है, and then if the dog or the pet can see everything, he'll be more panicked. And one more thing, you need to put your pet's name on a paper and then you have to stick it on top of the crate. So like my pet's name is Oreo. I have put her name here, Oreo, and a fragile handle with care. And I put my phone number just for emergency. अगर उसको ज़रूरत हुआ, they can call me in my phone number. And it's mentioned in the website that you have to put the name of the pet on the crate. Okay, so the next thing you need is a muzzle. So if you have a bigger dog like a German Shepherd or a Rottweiler, a Labrador, a Retriever, so अगर आपके पास बड़े breed है, then you will need a muzzle because they will ask you to put the muzzle on the dog's snout. So ये हो गए step 3 जिसमें आपको एक bag या फिर crate खरीदना है, and then you also have to buy a muzzle. So here I'm going to tell you a very important thing if you are planning to take your pet inside the cabin. अगर आप pet को cabin में लेके जाना चाहते हो, then always have a plan B. Plan B because ये जो pet को आप cabin के अंदर लेके जाना चाहते हो, उसके लिए आपको permission चाहिए from the flight captain. So if the captain does not give you the permission to take the bag inside the cabin, then you have to put it in the cargo. So make sure you have a crate like this with you. उसको खोल के आप dismantle करके आप लेके जा सकते हो आपके साथ. So you carry this. So in case अगर आपको pet को लेके cabin के अंदर नहीं लेके जाने देते, then आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा because ये बैग कार्गो में नहीं जाते. So you have to put the pet inside a crate like this. और उस टाइम पे अगर आपके पास एक crate नहीं रहेगा तो ये कार्गो में नहीं डालने वाले हैं and then आपका फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा, आप फ्लाइट में नहीं जा सकते हो. So please take a plan B, have a plan B. एक ऐसा ही बक्सा लेके जाइए, एक crate लेके जाइए. अगर आपका ये plan A सफल नहीं होता है, then this is your plan B. I always carry this. मैं पहले से ये कैरी करता था जब मुझे, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था कि the captain did not give me the permission to take Oreo inside the cabin. 5 किलोग्राम से अंदर था. Everything was inside the rules. Everything was all okay. And last में जाके captain ने ना कर दिया. Then I had to put her in the box and put her in the cargo. So don't make this mistake. Always have a plan B. When you buy the new crate, make your dog or your pet get used to that. It's very very important कि आप अपने pet को और थोड़ा सा ट्रेनिंग दो कुछ दिनों के लिए ताकि वो क्रेट के साथ familiar हो जाए, comfortable हो जाए. Otherwise it will be very difficult for the dog or the pet to get inside और उसको अंदर रखने के लिए for a longer duration. So the next step, step 4 is preparing the documentations. So आपको 2 document चाहिए पेट के लिए फ्लाइट में ले जाने के लिए. One is the vaccination record. You have to take the vaccination record of your pet. If it's a dog or a cat or a hamster or a rabbit, anything, you need to have the vaccination record or the vaccination card. जो भी उसका बुक रहता है या फिर कार्ड रहता है, जो भी रहता है, you have to take the vaccination record. फ्लाइट ट्रैवल डेट से 1 साल के बीच में वैक्सीनेशंस होना चाहिए. Second is you need a fit to fly certificate from your local veterinary. So अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बैंगलोर से मुंबई एंड फ्रॉम मुंबई बैक टू बैंगलोर, अगर ये राउंड ट्रिप है, देन यू नीड टू मेक द फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट इन बोथ द लोकेशन. मतलब कि आपको
बैंगलोर में भी फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, एंड देन वंस यू गो बैक टू मुंबई, मुंबई में भी आपको जाके दोबारा फिर से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज द फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट नीड्स टू बी मेड इन द लास्ट 24 आवर्स ऑफ द फ्लाइट टाइम. एंड डोंट मेक द मिस्टेक लाइक आप डॉक्टर को बोल के एक ब्लैंक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बना लिया, 2 बना लिए, और उसको आप मुंबई में जाके उसमें डेट डाल के आप उसको लेके ट्रैवल कर रहे हो. डोंट डू दैट, because you need to make the fit to fly certificate from your origin station, like origin airport. अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो, then you need to make the fit to fly certificate from Mumbai. So this is a sample for the fit to fly certificate. Sometimes the doctor gives the fit to fly certificate in a form format, and sometimes he writes all the details in the letterhead and signs it for you. That will also work as a fit to fly certificate. कोई भी local veterinary के पास चले जाओगे तो you will get the fit to fly certificate from the doctor. And I would suggest making multiple copies. इसका xerox copy बना लो. Alright, so the next step is step 5 is estimating the total cost for carrying your dog. इसका जो cost है, it's basically the excess baggage charges जो होते हैं bags के, that charges you have to pay for the pet. For example, my pet Oreo is 5.5 kilograms and the box, the crate, उसका जो crate है प्लास्टिक का, that weighs around 2.5 kilograms. 500 अगर उसका excess baggage का charge है, then for 8 kilograms you have to pay 4,000 rupees. उसमें taxes भी लगने वाले हैं, तो 4,500 रुपया खर्चा होता है जब भी मैं ओरियो को लेके जाता हूँ. So for example, if you have a bigger dog like a German Shepherd, Rottweiler, Labrador or a Retriever, anything, you would know that उसका average weight जो होता है it's around 30 to 40 kilograms. So मान लीजिए आपका dog का weight is around 30 kilograms and you would need a bigger crate. So the crate would be around 10 kilograms, for example. So 30 plus 10 would be 40 kilograms. So 40 kilograms के लिए आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा. It's expensive, right? और अगर आपके पास 60 kilograms का कोई dog हो, all the best. So ये सब कुछ हो जाने के बाद the next step is step 6, which is to sit back and relax and wait for your travel date. Alright, so आपका सारा preparations हो गया है and then now it's the day to travel. So the step 7 is to go to the airport early, 3 hours early. So आपका जो flight time है उससे 3 घंटा पहले आप airport में पहुंच जाओ, because it is very important that whenever you're traveling with your pet, please make sure that you reach the airport 3 hours early. So you don't have to make any gate passes. Nobody will ask anything because मैं तो बस उसको बाहर ही लेके जाता हूँ. But make sure that you have all the documents in hand. अगर कोई भी गेट पे या फिर security person कोई भी अगर कभी भी आपको पूछता है, you only need to show them the fit to fly certificate and the vaccination report, and that's all. There is no other documentation which is required at the gate. So you go inside. You have to reach 3 hours early because the cargo needs time to be packed, to be verified. उसको security check करके उसको अंदर डालना है, तो उसके लिए टाइम लगता है. एंड ऑल्सो अगर आप पेट को फ्लाइट में लेके जाते हो, then there is a rule that you can carry only a maximum of 2 pets in the flight. So अगर आपसे पहले कोई जाके बुकिंग कर लेता है, then गया आपका टर्न. So make sure आप पहले ही पहुंच जाओ और उसको बुकिंग करके काम निपटा लो. Okay, so the next step, step 8. So the next step, step 8, is walk straight to the booking counter. पहले ही जाके उसको बता दो that you have a pet with you and you want to put the pet in the cargo or you want to carry him or her inside the cabin. The airline executive will go through all the documents. They will check the pet. They will check the weight of the pet and they will tell you if the pet is allowed inside the cabin or not. अगर 5 किलो से कम है, then you are allowed. So if you're traveling with the pet inside the cabin, you will be given the last seat of the whole flight. मतलब पूरा फ्लाइट का जो लास्ट वाला रो है उसमें आपको सीट मिलने वाला है. सो इसलिए अगर लास्ट सीट जल्दी बुक हो जाता है, देन इल बी बिगर प्रॉब्लम फॉर यू. एंड लास्ट सीट में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें लेग स्पेस कम रहता है एक तो, एंड देन द सेकेंड थिंग इज आप पुश बैक नहीं कर सकते हो, तो सीट पूरा अपराइट रहता है ऐसा. So it's very difficult. So be prepared for all these things. So once they go through all the documents, they will call for the manager or the person in charge or the officer in charge. उनको बुलाएंगे,
बुला के उसके साथ बातचीत करके जो भी प्रोसीडियर है, they will go through the whole procedure, because not everybody is accustomed to this, because this is not something that they find every day. So there might be people who does not know about the process of booking the flight, booking the pet on the flight. So don't panic, and they will do the process for you. So that brings to the next step, which is the step 9, is paying the bills. So once वो वेरीफाई कर लेते, वो प्रोसीडियर अपने सिस्टम में डाल देते, दे विल गिव यू अ रिसिप्ट. आपको एक रिसिप्ट मिलेगा विथ ऑल द वेट, और जो भी है वो वेट के साथ आपको एक रिसिप्ट मिलेगा. यू हैव टू टेक द रिसिप्ट एंड यू हैव टू गो टू द पेमेंट काउंटर. देयर इज अ सेपरेट बिलिंग काउंटर. सो इफ यू हैव एवर पेड फॉर एन एक्स्ट्रा बैगेज, यू वुड नो. तो पेमेंट आप बोर्डिंग काउंटर में नहीं कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा टू द पेमेंट काउंटर. You show them the receipt and you pay them using a card, as simple as that. So once you make the payments, they will give you a printed form, a printed receipt. So उस receipt को लेके आपको वापस boarding counter में जाना है, and based on that they will prepare your boarding pass. And that brings to the step 10. So you are paid for the extra baggage of the pet, and the boarding pass has been created. Now the next step is to go to the cargo. If you're planning to take the dog or the pet in the cargo, then you need to take the crate and you need to take it to the cargo hold. So somebody from the booking counter, they will accompany you to the cargo hold, and inside the cargo hold you will be asked to take out the pet from inside the crate, and the crate will be scanned in the X-ray. Make sure that it's very important that you do not put your pet inside the X-ray, because it's very harmful for your pet. And then put the crate inside the X-ray machine. X-ray में वो scan हो जाएगा, and then उसको वापस crate के अंदर डालो. That you take a couple of zip ties after the security scan cargo के लिए. You put a zip tie and tie your crate door so that it doesn't open. From there onwards, you have to come back, and the dog will be taken away. Okay, so that is the procedure for a cargo. If you're planning to take the dog inside the cabin, that is where the fun part starts. So you have to wait for the confirmation from the captain. So you have to wait until the captain arrives, or if he is in a different flight, once he lands the flight, he will have the access to his phone, and that is when the booking counter person, the boarding counter person will send him some snapshots, some pictures of your dogs. आपका जो भी क्रेट है, जो भी बैग है, उसके साथ आपका डॉग के साथ उसका पिक्चर्स व्हाट्सएप करके या फिर जो भी है उनको भेजेंगे. वो पिक्चर्स देख के दे विल अप्रूव. ओके, दे विल अप्रूव दैट इफ यू कैन कैरी द पेट इनसाइड द कैबिन. इफ दे डोंट अप्रूव, you cannot carry the pet inside the cabin no matter what. So I have faced this issue a couple of times. Jab the captain had denied the permission to take the pet inside the cabin. It can be any reason. The captain might be not very friendly to pets. He might think of some infection or some disease. If the captain says no, you cannot take the pet inside the cabin. That is the final verdict. So no matter आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी आप कोशिश कर लो, once he says no, that means no. So that is when your plan B comes in place. तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था एक क्रेट भी खरीद लो. If the captain says no, you have to take out the pet, put it inside the crate, lock it, and then फिर से वो प्रोसेस चालू करना पड़ेगा जो कार्गो के लिए करना था आपको. Sometimes you have to wait for a long time, and till the last moment you have to wait for the permission, for the approval of the captain, because the captain is not available. Maybe he is flying a different flight, or maybe he is not available on the phone. So the Air India guys, the booking counter guys will be trying to reach him, but whenever he is available, he will be able to approve the pet for your cabin. So जब तक इसका परमिशन नहीं मिल जाता है तो आपको उधर ही बैठे रहना है, उसके पास रहो, and just communicate with them. So once the permission is given, so the Air India representative or somebody from the booking counter will accompany you, because you will not have time to go through the security checks and the long lines in the security checks. So they will take you through some shortcuts and go through past the lines and all the queues, और आप फटाफट उसका
चेक इन एंड एक्सरे करवा के जो भी आपका बैगेजेस हैंड बैगेजेस रहेगा सब कुछ चेक इन करवा के आपको अंदर लेके जाने वाले हैं. डोंट पुट योर पेट इनसाइड द एक्सरे मशीन इन द सिक्योरिटी चेक इन. Always do a metal detector test, and then the representative will leave you at the boarding gate. So the next step, step 11, is you are waiting at the boarding gate, waiting for the announcement of the boarding. Try to find a place where you don't have too much of people, जहाँ पे crowd ज़्यादा ना हो. And once the boarding announcement starts, you have to go to the boarding gate. And I forgot to mention, you'll also be given a pet pass. It's like a boarding pass जो आपको boarding counter से मिलने वाला है. So that along with your boarding pass you have to produce in the boarding gate, and only then they will allow you to go inside the flight. Once you are inside the flight, you'll be given the last row as I mentioned. So you have to go to the last row and sit there quietly. You cannot take your pet outside your crate or your bag, because there will be fellow passengers, there will be people around you. If somebody says something, if somebody does any kind of a complaint or anything, you will not be allowed to take the pet inside the cabin. उसको वापस निकाल के आपको आपका फ्लाइट ही कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको उसको कार्गो में डालना पड़ेगा. So make sure that you sit quietly, put your bag, the pet bag on your lap or something, and do not take out your pet from the bag. And actually there is one more step, which is step 13, is that when you have a cargo and you have landed to your destination, so you have to collect your cargo. And the procedure to collect the cargo is they usually I'm saying usually because in bigger airports में ऐसा होता है. कभी कभी मैंने whenever I tried traveling to a smaller city like Guwahati and smaller cities, I have faced problems. So whenever in bigger airports, they usually take the crate. There is a separate person handling the crate. उसको अलग से एक ट्रॉली में डाल के it will be taken out from the cargo door. So whenever you are at the belt, like the luggage belt, you have to tell there will be somebody from the airlines. So आप उसको जाके बता दो कि I have a pet and this is my document, this is my receipt and everything, and I have a pet in the cargo. I want to know where to collect the pet cargo. So they will take you to the cargo hold. उसमें से जाके आपको कलेक्ट करना है. So you have to wait for some time क्योंकि वो फ्लाइट से निकालेगा and then उसको लेके आने वाला है. So it takes time. So you have to wait there, and usually उसको कार्गो में लेके आते हैं. But sometimes in smaller cities they put the crate on the luggage belt, and it's so annoying. And it happened to me couple of times, both the times in Guwahati, and I was so frustrated. I was so pissed off कि एक लाइव एनिमल को आप एक लाइव पेट को कैसे आप एक ऑटोमेटिक बेल्ट में डाल सकते हो. इट फॉल्स, उसमें काफ़ी बार वो गिरता है एंड देन रोल होता है, एंड इट्स लाइक, एंड वन टाइम Oreo got injured in the eye as well, and she was not able to open the eye for so many days. I had to take her to the doctor and get her treated, and it's unfortunate. I think there is no control for it, because जब वो लोग कार्गोस को निकाल रहे हैं, आप तो फ्लाइट में रहोगे, आप कुछ बोल नहीं पाओगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन बिगर सिटीज़ वेयर दे नो ऑल दिस थिंग्स, इसलिए मैं बोला था कि आपको वो स्टिकर डालना है, फ्रेजाइल स्टिकर भी डालना है, so that they know that this is something very fragile. So these are the steps that you need to follow for carrying a pet in a cargo. This is a rather very long video which turned out. So, but I'm sure if you follow all these steps, अगर आप सारा steps properly follow करते हो, then you will not have any kind of a problem in flying with your dog in Indian Airlines in anywhere in India. So best of luck with your future flight with your pet. And I hope I was able to clarify and all the queries and all the questions that you had regarding traveling with your pet in a flight. And if I still haven't able to answer all your questions, I will be putting up a separate video for Q&A, all the questions that I receive on my Instagram and my Facebook and on YouTube. And you can go check out that video. I'll put a link in somewhere on top. And if you have any kind of a similar queries, that will answer your queries as well. So thank you for watching my video.
If you like this video, do consider subscribing to my channel. And I make travel films, I make camera gear reviews and tips and tricks for filmmaking and photography, and how to improve your photography and cinematography, and also travel films. So thank you, and thank you for watching my video. Stay tuned. Have a safe flight.